Welcome to SNS Academy. I am Satyanarayana Saha. Today, I am going to discuss 14th chapter of Indian Polity by M. Laxmikanth, Federal System. Before we have discussed 13 chapters, फेडरल सिस्टम क्या है, फेडरल सिस्टम का फीचर्स क्या है और फेडरल सिस्टम क्यों चाहिए, ये चीज़ जानने के लिए ये चैप्टर हम पढ़ेंगे. लेट अस स्टार्ट. पहले हम लोग जानेंगे कि फेडरल सिस्टम क्या है. फेडरल सिस्टम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. जिस तरह इंडिया में स्टेट सेंटर है, सेंटर और स्टेट का क्या तालमेल रहना चाहिए, वो सब यहाँ पर डिस्कस किया गया है. फेडरल सिस्टम क्या है, फेडरल फीचर्स क्या है, दिस थिंग्स narrated in this topic. Political scientists have classified governments into unitary and federal on the basis of the nature of relations between the national government and the regional governments. By definition, a unitary government is one in which all the powers are vested in national governments and the regional governments, if at all exists, derive their authority from the national government. A federal government, on the other hand, is one in which powers are divided between the national government and the regional government by the constitution itself, and both operate in their respective jurisdictions independently. Britain, France, Japan, China, Italy, Norway, Sweden, and so on have a unitary model of government, while the US, Switzerland, Australia, Canada, Russia, Brazil, Argentina, and so on have a federal model of government. In a federal model, the national government is known as the federal government or the central government or the union government, and the regional government is known as the state government और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट. तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट गवर्नमेंट को क्लासिफाई किए हैं यूनिटरी और फेडरल में. ये रिलेशन जो रहता है नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट को देखकर यूनिटरी और फेडरल सिस्टम बनाया गया है. यूनिटरी गवर्नमेंट यही है जो ऑल पावर वेस्टेड इन द नेशनल गवर्नमेंट, सभी पावर नेशनल गवर्नमेंट के पास रहता है. रीजनल गवर्नमेंट रीजनल गवर्नमेंट का, नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट का सब पावर नेशनल गवर्नमेंट के पास रहता है. नेशनल गवर्नमेंट से अथॉरिटी लिया जाता है, पर फेडरल गवर्नमेंट में ऑन द अदर हैंड इज वन इन विच पावर, वहाँ पर पावर को डिवाइड किया गया है नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट का द्वारा, और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑपरेट करता है. जहाँ पर जुरिस्डिक्शन इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होता है और कौन कहाँ कहाँ पर फेडरल सिस्टम चलता है, कहाँ कहाँ पर यूनिटरी सिस्टम चलता है, जिससे ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, इटाली, नॉर्वे, स्वीडन, ये सब में यूनिटरी मॉडल चलता है. जैसे यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रसिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यहाँ पर सब फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट चलता है. यूनियन गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट इज नॉन एज स्टेट गवर्नमेंट. रीजनल गवर्नमेंट को जिस तरह स्टेट गवर्नमेंट बोला गया है,
जिस तरह इंडिया में अभी 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है। The specific features of the federal and unitary governments are mentioned in a comparative manner. वो टेबल में दिया गया है। The term federation is derived from a Latin word foedus, जो फेडरेशन टर्म ये एक लैटिन वर्ड से आया है जो कि फोएडस बोला जाता है। फोएडस मीन्स ट्रीटी और एग्रीमेंट। फेडरेशन इज ए न्यू स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम में एक स्टेट्स समझा जाता है विच इज फॉर्म्ड थ्रू ए ट्रीटी और एन एग्रीमेंट। यहाँ पर एग्रीमेंट रहता है कितना पावर स्टेट को होना चाहिए, कितना पावर सेंटर को होना चाहिए, कौन सा केस में इंडिविजुअली वो लोग ऑपरेट करेंगे, कौन सा केस में मिलकर ऑपरेट करेंगे, वही सब बिटवीन द वेरियस यूनिट्स। द यूनिट्स ऑफ फेडरेशन आर नॉन बाय वेरियस नेम्स। जिस तरह स्टेट्स और कैंटन्स बोला जाता है स्विट्जरलैंड में, और प्रोविंस, कहाँ पर प्रोविंस बोला जाता है कनाडा में, रिपब्लिक्स रशिया में रिपब्लिक बोला जाता है। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट नेम है। A federation can be formed in two ways, that is by way of integration or by way of disintegration. In the first case, a number of militarily weak or economically backward states come together to form a big and strong union. As for example, in the US, कहीं पर इकोनॉमिकली बैकवर्ड रहता है और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग का तालमेल को लेकर सेंटर स्टेट बना गया है। जैसे स्टेट्स का कुछ पैसा हुआ, ज़रूरत पड़ा तो वो लोग सेंटर को मांगते हैं। In the second case, big unitary states is converted into a federation by granting autonomy to the province to promote regional interest. बड़ा इलाका को छोटा में डिवाइड किया जाता है क्योंकि वेलफेयर जल्दी होगा। The US is the first and the oldest federation in the world. It was formed in 1787 following the American Revolution. It comprises 50 states. USA में 50 states है। Originally 13 states, पहले 13 states था, and is taken as the model of federation. The Canadian Federation comprised 10 provinces. Originally 4 provinces is also quite old, formed in 1867. The Constitution of India provides for a federal system of government in the country. The framers adopted the federal system due to two main reasons: the large size of the country and its socio-cultural diversity. They realized that the federal system not only ensures the efficient governance of the country but also reconciles national unity with regional autonomy. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। द फ्रेमर्स अडॉप्टेड द फेडरल सिस्टम ड्यू टू मेन रीजन्स। एक है लार्ज साइज ऑफ, क्योंकि इंडिया एक बड़ा कंट्री है और इंडिया में बहुत सारा डाइवर्सिटी दिखाई जाता है, जैसे लैंग्वेज हुआ, कल्चर हुआ, ये सब को मेंटेन करने में, यूनिफॉर्म करने में फेडरल सिस्टम का ज़रूरी है। ये है दो कोज। एक इंडिया कंट्री बड़ा है, दूसरा इसका डाइवर्सिटी कल्चर। हाउएवर द टर्म फेडरेशन हैज़ nowhere been used in the constitution. Instead, Article 1 of the Constitution describes India as a union of states. जिस तरह दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन को यूज़ किया गया है, इंडिया में उसका डिफरेंस है। जैसे आर्टिकल 1 में फेडरेशन वर्ड यूज नहीं किया गया है,
यूनियन वर्ड यूज किया गया है। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ पर फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं दिया गया है। According to Dr. B.R. Ambedkar, the phrase Union of States has been preferred to Federation of States. ये preferred है Federation of States से to indicate two things. The Indian Federation is not the result of an agreement among the states like the American Federation, and two, the states have no right to secede from the Federation. The Federation is a union because it is indestructible. इंडियन B.R. अम्बेडकर का ओपिनियन से इंडियन फेडरेशन ये एक रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट नहीं है। जिस तरह अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में है उस तरह नहीं है, और इसमें स्टेट्स का राइट नहीं है जो कि इंडेस्ट्रेबल मतलब डिस्ट्रॉय करना, अखुन्न रहना। जिस तरह स्टेट्स का कोई डिस्ट्रॉय ना हो। द इंडियन फेडरल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कनाडियन मॉडल एंड नॉट ऑन द अमेरिकन मॉडल। द कनाडियन मॉडल differs fundamentally from the American model in so far as it establishes a very strong center. The Indian Federation resembles the Canadian Federation in its formation by way of disintegration. In its preference to the term union, the Canadian Federation is also called a union. And third, in its centralizing tendency, vesting more powers in the center, वाइस वर्सा स्टेट्स। तो यहाँ पर कनाडियन मॉडल और यूएसए का मॉडल दिया गया है। जिस तरह यूएसए में स्टेट्स मोर पावरफुल है, स्टेट्स का पावर से सेंटर का पावर बना हुआ है और सेंटर को पावर ये लोग दिए हैं। लेकिन इंडिया में वैसा नहीं है। यहाँ पर सुपरमेसी होता है कॉन्स्टिट्यूशन, और सेंटर पावरफुल है। यहाँ पर एक टेबुलेशन में कंपेयर किया गया है, जैसे फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट में डुअल गवर्नमेंट, दैट इज नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट रहता है। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में सिंगल गवर्नमेंट रहता है, जो कि हर प्रॉब्लम, हर सॉल्यूशन नेशनल गवर्नमेंट के थ्रू सॉल्व होता है। यहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रहना जरूरी है फेडरल गवर्नमेंट में। यूनिटरी गवर्नमेंट में सिंगल, इसलिए वहाँ पर रिटन में भी रिटन और अनरिटन, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन हो या नहीं हो कुछ फर्क पड़ता नहीं है। डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट, वहाँ पर डिवीजन पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। यहाँ पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया नहीं जाता है यूनिटरी। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का सुपरमेसी रहता है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुप्रीम और मे नॉट भी सुप्रीम। यहाँ पर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन रहता है। जिस तरह जो चाहे मतलब नया नियम लागू किया जाए, उस होने से प्रॉब्लम होगा, इसलिए वैसा सिस्टम नहीं है जिसका थ्रू से कॉन्स्टिट्यूशन को बदलाव लाने में इजी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिजिड और फ्लेक्सिबल। यूनिटरी गवर्नमेंट में भी रिजिड होता है, जैसे फ्रांस में फ्लेक्सिबल, ब्रिटेन की तरह। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी रहता है, जुडिशियरी में भी इंडिपेंडेंट और मे नॉट भी इंडिपेंडेंट। यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट में बाईकैमरल लेजिस्लेचर होता है और लेजिस्लेचर में भी बाईकैमरल। ब्रिटेन और यूनिकैमरल, जिस तरह चाइना में यूनिकैमरल फॉलो करते हैं। यह था डिफरेंस था। यह था
फेडरल सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स था। तो अभी फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या फेडरल फीचर्स है, उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला है डुअल पॉलिटी। द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश a dual polity consisting of the union at the center and the states at the periphery. Each is endowed with sovereign powers to be exercised in the field assigned to them. Respectively by the Constitution, the Union government deals with matters of national importance like defense, foreign affairs, currency, communication, and so on. The state governments, on the other hand, look after matters of regional and local importance like public order, agricultural, health, local governments, and so on. कॉन्स्टिट्यूशन का डुअल पॉलिटी रहता है, जो कि यूनियन और सेंटर, ईच इज एंडोड विथ सॉवरेन पावर्स टू बी एक्सरसाइज इन द फील्ड assigned to them respectively by the Constitution. The Union government deals with matters of national importance, जो कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, कम्युनिकेशन एंड सो ऑन। यूनियन गवर्नमेंट डील करता है नेशनल इम्पोर्टेंस, जो कि डिफेंस हुआ, फॉरेन अफेयर्स हुआ, करेंसी हुआ, कम्युनिकेशन और सो ऑन। द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन द अदर हैंड लुक आफ्टर मैटर्स ऑफ रीजनल एंड लोकल इम्पोर्टेंस लाइक पब्लिक ऑर्डर, एग्रीकल्चर, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट्स एंड सो ऑन। After that, written constitution. Written constitution रहना जरूरी है। The constitution is not only a written document but also the lengthiest constitution of the world. ये written होते होते ये lengthiest constitution है, जो कि original it contained a preamble 395 articles था, जहाँ पर 22 पार्ट्स था, 8 शेड्यूल्स था। अभी यहाँ पर 470 आर्टिकल्स है और 25 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और 12 शेड्यूल्स है। इट स्पेसिफाइज द स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड फंक्शंस of both the center and state governments and prescribes the limits within which they must operate. Thus, it avoids the misunderstanding and disagreements between the two. यहाँ पर किस तरह कंट्री का स्ट्रक्चर रहेगा, किस तरह ऑर्गेनाइजेशन होगा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर का क्या पावर रहेगा, फंक्शन, सेंटर स्टेट गवर्नमेंट का, ये सब प्रेस्क्राइब किया गया है। डिवीजन ऑफ पावर्स। द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। सेवेंथ शेड्यूल में जो यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, उसका बारे में दिया गया है। जैसे द यूनियन लिस्ट कॉन्सिस्ट्स ऑफ 98 सब्जेक्ट, वो ओरिजिनली 97 था। द स्टेट लिस्ट 59 सब्जेक्ट्स, ओरिजिनली 66 था। एंड द कॉन्करेंट लिस्ट 52 सब्जेक्ट था, ओरिजिनली 47। बोथ द सेंटर एंड द स्टेट्स कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट, बट इन केस ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट द सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स। द residuary subjects which are not mentioned in any of the three lists are given to the center. Supremacy of the constitution. Constitution का supremacy रहना चाहिए। The constitution is the supreme or the highest law of the land. The laws enacted by the center and the states must conform to its provisions. Otherwise, they can be declared invalid by the Supreme Court or the High Courts through their power of judicial review.
Thus, the organ of government, legislative, executive, and judicial, at both the levels, must operate within the jurisdiction prescribed by the Constitution. कॉन्स्टिट्यूशन का ऊपर कोई नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन का हिसाब से गवर्नमेंट चलता है। वहाँ पर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल का क्या क्या फंक्शन रहना चाहिए लिखा गया है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, द डिवीजन ऑफ पावर एस्टैब्लिश्ड by the constitution as well as supremacy of the constitution can be maintained only if the method of its amendment is rigid। जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ रूल रेगुलेशन हम लोग चेंज आसानी से नहीं कर पाएंगे, इसीलिए रूल रेगुलेशन सस्टेन होता है और गवर्नमेंट का लिमिटेशन रहता है। Hence, the Constitution is rigid to the extent that those provisions which are concerned with a federal structure, center-state relations, and judicial organization can be amended only by the joint action of the central and state government। कुछ ऐसा लॉ रेगुलेशन चेंज करने के लिए हमको सेंटर और स्टेट दोनों का सपोर्ट ज़रूरत पड़ता है। Such provisions require for their amendment is a special majority of the parliament and also an approval of half of the state legislature। कोई नया आइन और नया लॉ लाने के लिए हमको क्या चाहिए, ना सेंटर का मेजॉरिटी चाहिए और हाफ ऑफ द स्टेट्स का अप्रूवल चाहिए। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, the Constitution established an independent judiciary headed by the Supreme Court for two purposes. One, to protect the supremacy of the Constitution by exercising the power of judicial review, and two, to settle the disputes between the center and the states or between the states. The Constitution contains various measures like security of tenure to judges, fixed service conditions, and so on to make the judiciary independent of the government। सेंटर और स्टेट का रिलेशन क्या रहेगा और जैसा सिक्योरिटी, टेन्योर ऑफ जजेस और उन लोगों का सर्विस कंडीशन क्या रहेगा, ये सब दिया गया है। बाइकैमरलिज्म मतलब पार्लियामेंट में दो हाउस रहना जरूरी है फॉर बाइकैमरल लेजिस्लेचर, कंसिस्टिंग ऑफ एन अपर हाउस एंड लोअर हाउस। द राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स ऑफ इंडिया फेडरेशन while the Lok Sabha represents the people of India as a whole। The Rajya Sabha, even though a less powerful chamber, is required to maintain the federal equilibrium by protecting the interest of the states against the undue interference of the center। After that, unitary features of the Constitution. Besides the above federal features, the Indian Constitution also possesses the following unitary or non-federal features. Strong center. The division of power is in favor of the center and highly inequitable from the federal angle. Firstly, the union list contains more subjects than the state list. Secondly, the more important subjects have been included in the union list. Thirdly, the center has overriding authority over the concurrent list. Finally, the residuary power have also been left with center, while in the US they are vested in the states. Thus, the Constitution has made the center very strong. A division of powers, center and highly inequitable from the federal angle. First, the union list
जो कि यूनियन लिस्ट में कंटेंट्स ज़्यादा सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट से. सेकेंडली, द मोर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैव बीन इंक्लूडेड द यूनियन लिस्ट. जो सा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में रखा गया है. सेंटर का ओवरराइडिंग अथॉरिटी ओवर द कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट में ओवरराइड कर सकता है. और रेसिडुअरी पावर हैव आल्सो बीन लेफ्ट विद द सेंटर. रेसिडुअरी पावर को सेंटर को दिया गया है. जैसे यूएसए में रेसिडुअरी पावर स्टेट्स का पास रहता है. स्टेट्स नॉट indestructible. Unlike in other federation, the states in India have no right to territorial integrity. The parliament can be unilateral action, change the area boundaries or name or any state. Moreover, it requires only a simple majority and not a special majority. कोई सा स्टेट्स का बाउंड्री चेंज करना, कोई सा स्टेट दूसरा स्टेट्स का साथ मिलाना, ये सब क्या पार्लियामेंट की सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू से होता है. हेंस द इंडिया फेडरेशन इज एन इंडेस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ destructible states. The American Federation, on the other hand, is described as an indestructible union or indestructible states, जो कि स्टेट्स का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए. आफ्टर दैट सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिया में एक तो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होता है, सभी स्टेट वही कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं. यूजुअली इन ए फेडरेशन द स्टेट्स हैव द राइट टू फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट from that of the center. In India, on the contrary, no such power is given to the states. The Constitution of India embodies not only the Constitution of the center, but also those of the states. Both the center and the states must operate within this single frame. The only exception in this regard was the case of erstwhile Jammu and Kashmir, which had its ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन. द ओनली एक्सेप्शन, पहले जम्मू कश्मीर को कुछ स्पेशल फैसिलिटी दिया जाता था, लेकिन वहाँ पर अभी यूनियन टेरिटरीज में उसको बदला गया है. फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल किया गया है, कुछ अमेंडमेंट के थ्रू से उसको करेक्शन मॉडिफिकेशन भी किया जाता है. द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज लेस रिजिड देन व्हाट इज फाउंड इन अदर फेडरेशंस. द बल्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द यूनिलैटरल एक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, आइदर बाय सिंपल मेजॉरिटी और बाय स्पेशल मेजॉरिटी. Further, the power to initiate an amendment to the Constitution lies only with the center. In US, the states can also propose an amendment to the Constitution. जो प्रोसेस होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का वो लेस रिजिड है देन व्हाट इज फाउंड इन अदर फेडरेशंस. Further, the power to initiate an amendment to the Constitution lies only with the center. In US, the states can also propose an amendment to the Constitution. No equality of state representation. The states are given representation in the Rajya Sabha on the basis of population. States राज्य सभा को रिप्रेजेंट भेजता है. Hence the membership varies from 1 to 31. सभी स्टेट्स में 1 to 31 ये वेरी करता है. In US, on the other hand, the principles of equality of representation of states in the upper house is fully recognized. Thus the American Senate, जहीं पर अमेरिकन सेनेट में 100 मेंबर्स रहते हैं, 2 फ्रॉम ईच स्टेट का रहते हैं,
This principle is regarded as a safeguard for smaller states. उसका बाद emergency provisions. The Constitution stipulates 3 types of emergency, जो कि रहता है national, state और financial. During an emergency, the central government becomes all powerful. जब भी emergency आता है उसी तरह उस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर मिलता है एंड द स्टेट्स गो इनटू द टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंटर. उस समय स्टेट्स सेंटर का कंट्रोल में आ जाता है. इट कन्वर्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू ए यूनिटरी वन विदाउट a formal amendment of the constitution. This kind of transformation is not found in any other federation. Single citizenship. In spite of dual polity, the constitution of India, like that of Canada, adopted the system of single citizenship. ये डुअल गवर्नमेंट काम करने की तहत और डुअल गवर्नमेंट काम करने के बाद यहाँ पर एक सिटीजनशिप फॉलो होता है. जिस तरह कनाडा में फॉलो होता है, देयर आर ओनली इंडियन citizenship and no separate state citizenship. All citizens, irrespective of the state in which they are born or reside, enjoy the same rights all over the country. The other federal states like US and Australia have dual citizenship, that is national citizenship as well as state citizenship. After that, integrated judiciary. The Indian Constitution has established an integrated judicial system with the Supreme Court at the top and the state high courts below it. This single system of courts enforce both the central law as well as the state laws. In US, on the other hand, there is a double system of courts, whereby the federal laws are enforced by the federal judiciary and the state laws by the state judiciary. All India service. In US, the federal government and the state governments have their separate public services. In India also, the center and the states, center और states में रहता है, have their separate public services. But in addition, there are all India services जो रहता है IS, IPS and IFS, which are common to both the center and the states. जो कि सेंटर स्टेट में वो कॉमन रहता है. IS ऑफिसर हुआ, ये सब अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने करता है, लेकिन उसका फंक्शन स्टेट गवर्नमेंट पर रहता है. और इस ऑफिसर लोग का कभी कभी डिमांड स्टेट्स लोग छोड़ने नहीं चाहते हैं, लेकिन सेंट्रल दबाव डालता है. उसी तरह सिचुएशन क्रिएट होता है. Thus, the service violates the principles of federalism under the Constitution. Integrated audit machinery. The Comptroller and Auditor General of India audits the accounts of not only the central government but also those of the states, but her appointment and removal is done by the President without consulting the states. Hence, this office restricts the financial autonomy of the states. The American Comptroller General, on the contrary, has no role with respect to the accounts of the states. जिस तरह कंप्ट्रोलर, ऑडिटर जनरल, ये लोग का राइट रहता है स्टेट को भी ऑडिट करे, लेकिन दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं है. पार्लियामेंट्स अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट. Even in the limited sphere of authority allotted to them, the states don't have exclusive control. The parliament is empowered to legislate on any subject of the state list. If the Rajya Sabha passes a resolution to that effect in the national interest, this means that the legislative competency of the parliament can be extended without amending the constitution. Notably, this can be done when
देयर इज नो इमरजेंसी ऑफ एनी काइंड। यहाँ पर लिमिटेड अथॉरिटी रहता है अलॉटेड टू देम स्टेट्स का जैसे एक्सक्लूसिव कंट्रोल नहीं रहता है, वो रहता है पार्लियामेंट का हाथ में। और पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट, द पार्लियामेंट इज एम्पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट इफ द राज्यसभा पासेस। और राज्यसभा अगर एक रेजुलेशन पास किया तो वो स्टेट लिस्ट को बदलाव ला सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, द गवर्नर हु इज द head of the state is appointed by the president. She holds office during the pleasure of the president. Or she also act as an agent of the center. Through him or her, the center exercise control over the states. The American Constitution, on the contrary, provided for an elected head in the states. In this respect, India adopted the Canadian system. गवर्नर को अपॉइंट कौन देता है ना, गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट की थ्रू से होता है। और जैसे इक्विवेलेंट रहा प्रेसिडेंट, यहाँ पर गवर्नर की थ्रू से उसका नाम से स्टेट का गवर्नमेंट रन करता है। इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, द इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स इलेक्शंस not only to the central legislature but also to the state legislature, but this body is constituted by the president and the states have no say in this matter. The position is same with regard to the removal of its members as well. On the other hand, US has separate machineries for the conduct of election at the federal and state levels. Election commission जो कि कंडक्ट करता है इलेक्शन, नॉट ओनली सेंटर का स्टेट का भी, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द स्टेट्स हैव नो से इन दिस मैटर। द पोजीशन इज सेम विथ रिगार्ड टू द रिमूवल ऑफ इट्स मेंबर्स। उसका बाद वीटो ओवर स्टेट बिल्स, द गवर्नर इज एम्पावर टू रिजर्व सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल्स passed by the state legislature for the consideration of the president. The president can withhold his assent to such bills not only in the first instance but also in the second instance. Thus, the president enjoys absolute veto and not suspensive veto over state bills. But in US and Australia, the states are autonomous within their fields and there is no provision for any such reservation. यहाँ पर स्टेट का चेंज करना, स्टेट्स का रिलेटेड यहाँ पर ज़्यादा वीटो पावर रहता है सेंटर का पास। क्रिटिकल एवेल्युएशन ऑफ द फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम का क्या क्रिटिकल एवेल्युएशन आया? फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज डेविएटेड फ्रॉम द ट्रेडिशनल फेडरल सिस्टम्स लाइक यूएस, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया and incorporated a large number of unitary and non-federal features, tilting the balance power in favor of the center. This has promoted the constitutional experts to challenge the federal character of the Indian Constitution. Thus, Casey Ware described the Constitution of India as quasi-federal. He remarked that India Union is a unitary state with subsidiary federal features rather than a federal state with subsidiary unitary features. अगर देखा जाए यूनिटरी फीचर्स को लिया जाए और फेडरल फीचर्स को लिया जाए तो यहाँ पर कुछ डेविएट किया गया है, यहाँ पर दोनों का मिक्स कर लिया गया है जिसको बोला जाता है क्वासी फेडरल सिस्टम। ये पूरा फेडरल नहीं है कि पूरा यूनिटरी नहीं है।
According to K. Sanathanam, the two factors have been responsible for increasing the unitary bias, tendency of centralization of the constitution. These are the dominance of the center in the financial sphere and the dependence of the states upon the central grants, and the emergence of a powerful erstwhile planning commission which control the developmental process in the states. He observed India has practically functioned as a unitary state through the union, and the states have tried to function formally and legally as federation. तो के सनातनम टू फैक्टर्स है, dominance of the center in the financial sphere and the dependence of the states, or emergence of powerful erstwhile planning commission which control in the developmental process. और वो ऑब्जर्व किया इंडिया हैज प्रैक्टिकली फंक्शन एज ए यूनिटरी स्टेट थ्रू द यूनियन एंड द स्टेट्स हैव ट्राइड टू फंक्शन formally and legally as a federation. However, there are other political scientists who don't agree with the above description. Thus, Paul Appleby characteristics the Indian system as extremely federal. Morris Jones termed it as a bargaining federalism. Ivor Jennings has described it as a federation with a strong centralizing tendency. He observed that the Indian constitution is mainly federal, with unique safeguards for enforcing national unity and growth. Alexandrais stated that India is a case sui generis. The unique character. Granville Austin called the Indian federalism as a cooperative federalism. He said that though the Constitution of India has created a strong central government, it has not made the state government weak and has not reduced them to the level of administrative agencies for the acquisition of policies of the central government. He described the Indian Federation as a new kind of federation to meet India's peculiar needs. यहाँ पर different political expert or political scientist, they have given different opinion about Indian federalism. Some are telling that cooperative federalism. तो किसका ओपिनियन से क्या बोला गया है उसको याद रखना है. ऑन द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इन एज मच एज it establishes a dual polity. The union is not a league of states united in a loose relationship, nor are the states the agencies of the union deriving power from it. Both the union and the states are created by the constitution. Both derive their respective authority from the constitution. He further observed, yet the constitution avoids the tight mold of federalism and could be both unitary as well as federal according to the requirements of time and circumstances. While replying to the criticism of over centralization in the constitution, he stated a serious complaint is made on the ground that there is too much centralization and the states have been reduced to municipalities. It is clear that this view is not only an aggression but is also founded on misunderstanding of what exactly the constitution contrives to do. As to the relations between the center and the states, it is necessary to bear in mind the fundamental principles on which it rests.
The basic principles of federalism is that the legislative and executive authority is partitioned between the center and the states, not by any law to be made by the center but by the constitution itself. This is what the constitution does. The states are in no way dependent upon the center for their legislative or executive authority. The states and the center are co-equal in this matter. It is difficult to see how such a constitution can be called centralism. It is therefore wrong to say that the states have been placed under the center. The center cannot, by its own, will alter the boundary of this partition nor the judiciary. यहाँ पर दोनों का सेपरेट सेपरेशन रहता है, जैसा स्टेट्स का और सेंटर का. इन द बोमाई केस जो कि 1994 में हुआ था, द सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन द कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल एंड कैरेक्टराइज फेडरलिज्म एज इट्स बेसिक फीचर्स. इट ऑब्जर्व द फैक्ट that under the scheme of our constitution greater power is conferred upon the center. Vice versa, the states does not mean the states are mere appendage of the center. जिस तरह सेंटर और स्टेट्स का पावर रहता है, सेंटर का ज़्यादा पावर रहता है, यह मतलब नहीं है जो कि स्टेट्स हर समय सेंटर का डोमिनेट हो जाए. The states have an independent constitutional existence. States का एक existence, independent constitutional existence है. They are not satellites or agents of the center. Within the sphere allotted to them, the states are supreme. The fact that during emergency and in certain other eventualities, their powers are overridden or invaded by the center is not destructive of the essential federal features of the constitution. They are exceptions, and the exceptions are not a rule. Let it be said that the federalism in the Indian constitution is not a matter of administrative convenience, but one of the principles, the outcome of our own process and a recognition of the ground realities. जो भी हो, इंडिया का सेंटर और स्टेट का दोनों का सॉवरेंटी रहता है. स्टेट्स सेंटर का एजेंट नहीं है. इन फैक्ट द फेडरलिज्म इन इंडिया रिप्रेजेंट्स ए कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द फॉलोइंग टू कॉन्फ्लिक्टिंग considerations. Normal division of power under which states enjoys autonomy with their own spheres, need for national integrity and a strong union government under exceptional circumstances. The following trends in the working of Indian political system reflects its federal spirit. जैसा टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स, कभी कभी टेरिटोरियल डिस्प्यूट होता है. जिस तरह महाराष्ट्र और कर्नाटक का ओवर बेलगुआम, डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स ओवर शेयरिंग of river water, between Karnataka and Tamil Nadu over Kaveri water. कावेरी वाटर के लिए डिस्प्यूट चलता है कर्नाटका और तमिलनाडु का बीच में. द एमर्जेंस ऑफ रीजनल पार्टीज एंड देयर कमिंग पावर इन स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एक्सेट्रा. द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स टू फुलफिल द रीजनल एस्पिरेशंस, फॉर एग्जाम्पल मिजोरम, झारखंड, तेलंगाना. डिमांड ऑफ द स्टेट्स फॉर मोर फाइनेंशियल ग्रांट्स, वो लोग मोर फाइनेंशियल ग्रांट्स चाहते हैं फ्रॉम द सेंटर टू मीट देयर डेवलपमेंटल नीड्स. एसरेशन ऑफ ऑटोनॉमी बाय द स्टेट्स एंड देयर रेसिस्टेंस टू द इंटरफेरेंस फ्रॉम द सेंटर. सुप्रीम कोर्ट्स imposition of several procedural limitations on the use of Article 356, जो कि प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट्स बाय द सेंटर रहता है. Today this much. I hope you understood well. Like, share and comment this video. If you share more, then my motivation will increase and I put my better effort. Thank you.